Good morning to all of you. Today we continue with the same session with the array programs. Yesterday we did the merging of the arrays, two arrays, and in the merging you require a third array where the two arrays are stored there. Now today also we will be merging it out, merging the arrays. Merging of arrays will be done. Two more questions we will discuss today, and I will be writing those questions, and hope so you are practicing it out, creating an array, then the index numbers and the elements, and you are then practicing it out. Go for it. Go with the loops, access the indexes, and if you are able to access the index, then you can easily go through the logic, what is happening there and what is being done. Likewise, today we go with the arrays, and let's proceed to the program. Web to input an array of size 4 and another array of size 6 and store the elements in third array as per the example. So A array, if it is 1, 2, 3, 4, then B array is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So you are going to store it into C array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is how you are going to store it. So let's move on with the program. Scanner s equals to new scanner system.in, and then create an array. You will require a I and counter if required. Then we will use a counter. Int A array equals to new int 4. Int B array equals to new int 6. So what will be the size of C array? So C array equals to new int 10. You got a 10. Alright, size is 10. Now enter the elements into first array. For I equals to 0, I less than 4, I plus plus. Previous was an example, no? Don't use it. Anything can be feed it in. Enter elements in first array. Of I equals to sc dot next int method. एक array बन गया A जिसमें एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब उसी तरीके से एक फॉर लूप चलाइए, बी में इनपुट ले लीजिए प्लस प्लस
settlement, enter elements into second array B of I equals to sc dot next empty मेथड बी एरे बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें लॉजिक कैसे लगेगी। ए का 0 सी के 0 में है ना, ए का 1 सी के 1 में है, ए का 2 सी के 2 में है, ए का 3 सी के 3 में है। तो यहाँ तक दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों लूप चल सकते हैं। तो एक लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 4 आई प्लस प्लस, और सी के आई इंडेक्स में ए का ith एलिमेंट हो गया। तो सी के 0 में ए का 0 स्टोर हो गया, सी के 1 में ए का 1 स्टोर हो गया, सी के 2 में ए का 2 स्टोर हो गया, सी के 3 में ए का 3 स्टोर हो गया। ठीक है, अब कहाँ से हमको करना है, अब दिक्कत यहाँ से, ये इंडेक्स कितना है, ये 4th इंडेक्स है। 4th इंडेक्स में बी का 0th एलिमेंट है कि नहीं। 5th इंडेक्स में सी का पहला, तो एक काउंटर चाहिए चलाने के लिए, तो सी की वैल्यू ले लेते हैं, C1 कर देते हैं इसको काउंटर, C1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ लूप कहाँ से चलेगा, आई इक्वल्स टू 4 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, सी ऑफ आई यानी कि सी के 4 में बी का C1 पहला एलिमेंट C1 प्लस प्लस हो जाएगा, फिर बी के 1 में बी के 5 सी के 5 में बी का 1, सी के 6 में बी का 2। सप्लाई मस्ट एरे और आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस सी ऑफ आई, मेन क्लोज क्लास क्लोज। बात समझ में आ रही होगी। Create the arrays 4 size, 6 size, 10 size, element entry in first array, element entry into the second array, and then C के 0 में A का 0, C के 1 में A का 1, C के 2 में A का 2, C के 3 में A का 3। ठीक है, अब यहाँ पे C के 4 में B का 1 सॉरी 0, फिर C के 5 में B का 1। Likewise it continues. So let's move on with the another question. Web to input 2 arrays, 2 different arrays है ना, different arrays of same size 4, दोनों के साइज 4, and store the elements into third array, store the elements into third array as per the example. Suppose A array now, it is 1 2 3 4. Now B array, it is again 5 6 7 8. Now C array equals to 1, then from back 8, then from front 2, then from back 7, then 3, then 6, then 4, then 5. This is how you have to, 1 from the front, 1 from the back, 1 from the front, 1 from the back, 1 from the front, like this. So import java.util.string class abc
equals to now scanner system dot in. We require INTI, and if anything required we will be checking it out. INT array equals to new INT 4, INT B array equals to new INT, its size is also 4, and INT C array equals to new INT 8. Alright, now we need to fill the array. For I equals to 0, I less than 4, I plus plus. Alright, so plan. Enter element in first array. So E of I equals to SC dot. नेक्स्ट टाइम तो मतलब फिर उसी में सुप्लन एंटर एलिमेंट इन सेकेंडरी में, ठीक है। तो बी ऑफ आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंटी मेथड एक ही लूप में दोनों एंट्री, बिकॉज बोथ एरेज आर ऑफ सेम साइज, सो साइमल्टेनियसली एंट्री इज डन. फर्स्ट एंटर्ड element will enter in A of 0, then B of 0, then A of 1, then B of 1, A of 2, then B of 2, A of 3, then B of 3. Likewise, it will get entered. Now, for I equals to 0. Now, the problem arises. How to and from where to where we should run a loop and what it gets stored. Let's check out with the example what is given in. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is it? These are the indexes of C array. Now, I can move ahead gradually. Is it? But what about the elements of B then? How will you store it? Now look at the 0th position. This is 1. Second position 2. Is it? Then 4th position. It is third element. Then 6th position. It is 4th element. So all the even indexes starting with 0. All the even indexes starting with a 0 contains the element of first array. Is it? तो हम कैसे लूप चलाएंगे? For I equals to 0, I less than 8, I plus equals to 2. Now C of I, यानी कि C में 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। C में इस तरीके से चलेगा, लेकिन A का कैसे चलना है एलिमेंट? एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो A of C1 plus plus. Let one counter here, C1. Another counter also required, C2. Now C1 equals to 0. Alright. Now for the B element, first index, third index, 5th index and 7th index. These are all are odd indexes. The odd indexes are remaining here. Is it? All the odd indexes. In this odd indexes, you have to fill the element of B array. Odd index B array. Odd index B array you have to do. But the filling is how? Filling is from back to first. That is,
first third index element, then fourth index element, then fifth index element, then sixth index element gets stored there. Is it? So counter is running from back. So C2 equals to 3 or 4 minus 1. Is it? So C2 equals to 3 or 4 minus 1, you can use it. And then we will gradually decrease the C2. So for I equals to 1, I less than 8, I plus equals to 2. Is it? So C of I equals to B of C2, C2 माइनस माइनस, यानी कि C के 1 में B का 3, फिर C के 3 में B का 2, फिर C के 5 में B का 3, सॉरी घट रहा है ना, 3 था तो 2 हो जाएगा, उल्टा चल रहा है। जैसे C के 1 में B का 3 चला स्टोर, फिर C के 3 में B का 2 चला, फिर C के 5 में B का 1 चलेगा, और फिर C के 7 में B का 0 चला। ठीक है ना। फॉर I equals to 0, I less than and I plus plus, oh sorry less than and 8, अब तो मर्ज्ड हो गया ना, तो यहाँ पे सुपलन मर्ज्ड एरे दे दो, मर्ज्ड एरे सुपलन सी ऑफ आई, मेन क्लोज क्लास क्लोज। चेक करो एक बार। तो मेन बनाया, 2 काउंटर लिया, C1 C2, C1 को 0 किया और C2 को लास्ट इंडेक्स दिया 3, किसका? B का लास्ट इंडेक्स 3 रखा इसमें, क्योंकि हमको यहाँ से वापस आना है और यहाँ से बढ़ कर जाना है। C1 से बढ़ कर जाएंगे, C2 से घट के आएंगे। A B C एरे बनाया, A में एलिमेंट एंट्री लिया, B में भी एलिमेंट एंट्री ले लिया। यहाँ पे ऑड इंडेक्सेस में, ये जो बताया था यहाँ पे, सॉरी इवन इंडेक्सेस में, ये जो इवन इंडेक्सेस है इंक्लूडिंग 0, 0, 2, 4, 6, ये सारे इवन इंडेक्सेस है। इस इवन इंडेक्सेस में कौन कौन स्टोर हो रहा है? एक एलिमेंट स्टोर हो रहा है, वी आर स्टोरिंग ए एलिमेंट, सो इट इज I0 less than plus equals to 2, I plus equals to 2, so it moves to 2 step, and you are storing element gradually 1 by 1 with the help of counter C1. Here you are storing at an odd index gradually with the counter, help of a counter from B array, but it is in backward order from behind to front, in backward order you are going. Then the merged array, this is an array, so you can have an homework, the same question, construct 2 array of a size same size and store the elements. Suppose the same array is there, 1 2 3 4, and B array is also there, 5 6 7 8, ठीक है। तो C array बना लीजिए। C array कैसे बनेगा? C array में आप इस तरीके से बनाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का क्यूब, मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलो कल फिर अपने सॉल्व कर, जो भी हो कर लेना फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू।